पर्सन 50,000 सेलर्स है, मुझे 50,000 लॉट्स खरीदने थे, अब मैं बाइंग कर लूंगा, मार्केट में सेलिंग खत्म कर दूंगा। अब क्या होगा, अब इन सेलर्स को रियलाइज होगा कि अरे भाई सडनली कोई तो बहुत बड़ा बायर आ गया है, एक्चुअली हमारे साथ टेक्निकली एक स्कैम हो गया है, क्योंकि जो 50,000 सेलिंग इतनी मोमेंटम के साथ जो सेलिंग आई थी वो एक ही बायर ने आके सारी सेलिंग खत्म कर दी, बिकॉज दैट वाज एक्चुअली अ लिक्विडिटी स्वीप। And as you can see, after sweeping this liquidity over here, price gave a very big up move on the uptrend side. प्राइस ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे लो बायर्स को स्वीप करके प्राइस यहाँ से ऊपर चले गया। अब अगर ऑब्वियसली कोई बाइंग करने के लिए बैठा होगा, वो यहाँ बाइंग किया होगा या यहाँ बाइंग किया होगा एक्सपेक्ट करके कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, बट एक्चुअली क्या हुआ, प्राइस ने उनका स्टॉप लॉस लिया, लिक्विडिटी स्वीप किया और यहाँ से एक्चुअली अप ट्रेंड आया। एंड सबसे ज्यादा ये चीज गोल्ड में होती है। So this is basically how liquidity works. This is how the logic is behind liquidity. अब इसके ऊपर और डिटेल में जाते हैं और समझते हैं कि लिक्विडिटी को एक्जैक्टली रीड कैसे करना है, कौन से लेवल्स पे लिक्विडिटी रेस्ट कर रही होती है, कौन से कॉमन एरियाज है जहाँ पे लिक्विडिटी पूल बनते हैं। तो स्टार्टिंग ऑफ विद द मोस्ट बेसिक थिंग, सबसे बेसिक लिक्विडिटी पूल जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा इक्वल हाइज और इक्वल लोज। अब इक्वल हाइज और इक्वल लोज क्या होता है? सो लेट मी फाइंड एन एग्जांपल फॉर यू। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो दिस इज अ वेरी स्मॉल एग्जांपल ऑन अ 1 hour टाइम फ्रेम। सो इफ यू सी ओवर हियर, देयर आर अ लॉट ऑफ इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज दैट आर क्रिएटेड हियर। यहाँ पे मल्टीपल टचेज है, 1 2 3 और ये 4। तो ये एरिया जो है, दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ अ इक्वल हाई, तो इसको इक्वल हाई कहा जाएगा और यू कैन ऑल्सो कॉल इट अ सिंपल रेजिस्टेंस लेवल। एज यू कैन सी यहाँ पे प्राइस ने ऊपर की तरफ लिक्विडिटी स्वीप दिया एंड देन एक्चुअली यहाँ से मूव नीचे की तरफ, बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड शुरू हो गया फ्रॉम दिस लेवल। सो दिस इज वन बेसिक एरिया जहाँ पे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी रेस्ट कर रही होती है, जहाँ पे बहुत सारे लोग वेट करते हैं एक्चुअली ब्रेकआउट बाय करने के लिए, वहाँ पे सेल साइड का लिक्विडिटी होता है। अब नॉर्मली बहुत इजी है इसको स्पॉट करना, क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से देखोगे और पिछले 2 एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताए हैं, नॉर्मली लिक्विडिटी स्वीप जब होता है तो वो एक लेस इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ब्रेक करके एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस में टैप होता है और वहां से प्राइस कंटिन्यूएशन देता है। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक इक्वल हाइज लेवल जरूर था, इसको स्वीप करके प्राइस ने एक्चुअली इस मेजर रेजिस्टेंस को टैप किया एंड यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ चला गया। एंड सिमिलरली अगर आप हमारे प्रीवियस एग्जांपल्स को भी देख लेते हो, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, दिस वाज अ प्रीवियस एग्जांपल, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ, करेक्ट, बट अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट था, प्राइस ने एक्चुअली उसको टैप इन करके यहाँ से ऊपर की तरफ गया। तो उसको आप ऑनेस्टली देखोगे तो इट इज बेसिक सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि लिक्विडिटी का कंसेप्ट कैसे काम करता है, सो दैट आप लिक्विडिटी की वजह से ट्रैप ना हो जाओ। सिंपली अगर मैं इसको आगे का एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, अभी करंट रिसेंट एग्जांपल जो था एनएफपी न्यूज का, अगर मैं आपको उसका भी एग्जांपल दिखा देता हूँ तो आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पे जो है प्राइस ने स्वीप दिया, तो ये था हमारा लिक्विडिटी स्वीप फॉर एनएफपी। बट अगर आप इसको जूम आउट करके देखो तो दिस वाज अ मेजर रेजिस्टेंस लेवल, जिसकी वजह से ये पूरा डाउन साइड आया। तो अगर आपको क्लियरली दिख रहा है कि एक मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल फॉर्म हुआ है आपके अगेंस्ट, देन आपको उस चीज को अवॉइड करना है सिंपली, बिकॉज दैट कैन बी अ लिक्विडिटी स्वीप वेरी वेरी क्लियरली। सो ये हो गया एक चीज, सिंपल टिप हाउ टू अवॉइड दैट। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो दिस वाज अ बेसिक इक्वल लोज ऑफ लिक्विडिटी, प्राइस ने इसको स्वीप किया, इट केम इनटू अ मेजर सपोर्ट लेवल एंड देन यहाँ से प्राइस ने एक्चुअल मूव दिया। अब इसको हम हायर टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, अगर आप इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो प्रीटी मच आपको सिमिलर चीजें देखने को मिलेंगी। सो आई रिमेंबर ओवर हियर, इफ यू सी दिस लेवल, यहाँ पे दिस इज टेक्निकली इक्वल हाई लेवल, यहाँ पे प्राइस ने इसको स्वीप किया, इट वेंट इनटू दिस रेजिस्टेंस लेवल। अगर इसको 1 मिनट में जाके देखोगे तो इट इज अ गुड रेजिस्टेंस लेवल, यस, यहाँ से इट्स अ गुड रेजिस्टेंस लेवल, प्राइस ने इसको टैप किया एंड देन एक्चुअली नीचे की तरफ मूव दिया। सो इट हैपेंस इवन ऑन द 1 मिनट टाइम फ्रेम, अगर आप इसको डिटेल में देखने की कोशिश करोगे तो। अगेन इफ यू सी हियर, इक्वल हाइज को स्वीप किया, वेंट इनटू अ मेजर रेजिस्टेंस लेवल एंड देन वेंट लोअर। अब इसको आप या तो एंट्री मॉडल की तरह यूज कर सकते हो, अगर आपको क्लियरली दिख रहा है कि प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे यू कैन सी एज पर एनालिसिस दैट प्राइस इज बेरिश। नाउ व्हाट यू कैन डू, इफ यू वांट स्नाइपर एंट्रीज, यू कैन यूज लिक्विडिटी स्वीप ऑन द 1 मिनट टाइम फ्रेम टू एक्चुअली टाइम योर एंट्रीज परफेक्टली। अब अगर यहाँ पे मान लो मुझे दिख रहा है कि भाई ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो चुका है नीचे की तरफ, प्राइस नीचे जाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, अगर प्राइस नीचे जाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है दैट मींस मार्केट में लिक्विडिटी की कमी है। लिक्विडिटी कैसे लेगा, लिक्विडिटी लेगा इक्वल हाइज को स्वीप करके, एंड एज यू कैन सी यहाँ पे इक्वल हाइज स्वीप हो गए। अब अगर मान लो यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी, यहाँ पे 1 मिनट कैंडल क्लोज पे मैंने एंट्री ले ली, इस कैंडल पे मैंने एंट्री ले ली और यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस रख लिया। अब अगर मान लो मुझे एक 1:2 का भी टारगेट चाहिए तो यहाँ पे सिंपल 1:2 का टारगेट अचीव हो रहा है। अब अगर हाइंड साइड में इसको देख के आप इसको नीचे तक ड्रैग करोगे
तो इट इज अ 1:7, 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, विच इज ऑफ कोर्स इज नॉट वेरी रियलिस्टिक. इसको हाइंडसाइट में दिखाई कोई भी महान बन सकता है, बट दिस इज नॉट रियलिस्टिक. कॉमन एरिया ऑफ रेस्टिंग लिक्विडिटी. उसके बाद आता है वेरी ऑब्वियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, विच इज प्रीटी मच द सेम थिंग. एक ऑब्वियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जो होता है वो हमेशा स्वीप होता है. एक ऐसा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जो आपका दिमाग आपको कह रहा है कि भाई यहाँ तो सपोर्ट है, यहाँ तो रिस्पेक्ट हो गई होगा, वो हमेशा स्वीप होता है. एंड दैट नेसेसरली डजंट हैव टू बी इक्वल हाई और इक्वल लो. लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप इस सपोर्ट लेवल को देखोगे, सो दिस इज नॉट इक्वल हाई और इक्वल लो. यहाँ पे सपोर्ट था, इसको यहाँ पे टेक्निकली प्राइस ने स्वीप कर लिया, फिर प्राइस यहाँ पे टैप इन किया, फिर यहाँ पे फिर से टैप इन किया. दिस इज नॉट अ इक्वल हाई और इक्वल लो, दिस इज अ सपोर्ट लेवल. एंड एज यू कैन सी इट हैज बीन स्वेप्ट. ऐसे और एग्जांपल्स ढूंढ लेते हैं हम. तो इफ यू कैन सी दिस इज आल्सो अ वेरी ऑब्वियस सपोर्ट लेवल जिसको स्वीप करके प्राइस ने फिर ऑफ कोर्स ऊपर की तरफ मूव दिया है. एंड देन लेट्स फाइंड आउट वन लास्ट एग्जांपल बिफोर वी मूव फॉरवर्ड. देखो यहाँ पे दिस इज अगेन अ वेरी ऑब्वियस सपोर्ट लेवल. तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि कोई भी सपोर्ट लेवल जो 2 से 3 बार टेस्ट हो चुका है, उसके बाद आपको उस सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल से दूर रहना चाहिए, बिकॉज 99% चांस है कि वो स्वीप करके नीचे वाले एरिया को टैप करेगा या ऊपर वाले रेजिस्टेंस को टैप करेगा. एज यू कैन सी ओवर हियर, दिस वाज अ वेरी ऑब्वियस सपोर्ट लेवल जिसको प्राइस ने मल्टीपल टाइम्स रिस्पेक्ट किया, बट इवेंचुअली ये स्वीप होके एक मेजर सिग्निफिकेंट सपोर्ट लेवल में टैप इन किया एंड देन प्राइस ने ऊपर की तरफ एक मेजर मूव दिया. सो दिस इज अगेन अ सेकंड टाइप ऑफ लिक्विडिटी पूल दैट यू कैन इजीली स्पॉट, जहां पे एक ऑब्वियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल डेवलप हो रहा है. एंड ऑफ कोर्स दिस वर्क्स ऑन द स्मॉलर टाइम फ्रेम एज वेल. द नेक्स्ट एंड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हिच नोबडी टॉक्स अबाउट इज टाइम विंडोज. अब टाइम विंडो के हिसाब से अगर आप प्राइस को देखना शुरू करोगे, देन अगेन दैट्स अ वेरी वेरी गुड एंड हेल्पफुल लिक्विडिटी पूल एरिया. सो लेट मी प्लॉट द टाइम सेशन इंडिकेटर. ओके, सो इफ यू कैन सी ऑन माय चार्ट, यहाँ पे आपको इंडिकेटर दिख रहा होगा एशिया का, लंदन का और न्यूयॉर्क का. यहाँ पे आप अगर केयरफुली देखोगे, हर एक दिन एक ना एक सेशन का हाई या लो स्वीप होता है और उसके बाद अगले सेशन का बड़ा मूव शुरू होता है. तो इट इज वेरी ऑब्वियस दैट हर सेशन के हाईज और लोज के पास भी लिक्विडिटी रेस्ट करती है. सो द बेस्ट एग्जांपल इज ओवर हियर. इफ यू सी, यहाँ पे हमारा एशिया सेशन था, दिस इज एशिया सेशन हाई, दिस इज एशिया सेशन लो. प्राइस नीचे की तरफ गया, एशिया लो और लंदन लो को स्वीप किया एंड देन इट वेंट अप एंड गिव अ मूव ऑन द अपसाइड. यहाँ पे देख लेते हैं फिर से. यहाँ पे भी अगर आप देखो तो बहुत प्यारा एग्जांपल है. एशिया सेशन, एशिया क्लोज के बाद लो को स्वीप किया गया एंड देन लंदन ने ऊपर की तरफ मूव दिया. देन अगर आप यहाँ देखोगे तो लंदन हाईज टेक्निकली स्वेप्ट एंड देन न्यूयॉर्क ने नीचे की तरफ मूव दिया. यहाँ पे फिर से देखोगे एशिया का हाई स्वेप्ट हुआ, यहाँ पे एशिया क्लोज के बाद सीधा एक डोजी कैंडल बना, वेंट इनटू अ रेजिस्टेंस लेवल, प्राइस केम डाउन एंड देन उसके बाद यहाँ पे देयर इज नो स्वीप एंड देन प्राइस स्ट्रेट अप वेंट डाउन इन न्यूयॉर्क. यू कैन आल्सो प्लॉट द सेम इंडिकेटर, दिस इज कॉल्ड एज FXN एशिया सेशन रेंज. उस पे आप ट्रेडिंग पे सर्च करके यू कैन प्लॉट दिस इंडिकेटर एंड प्रैक्टिस फॉर योरसेल्फ एंड ट्राई टू स्पॉट आउट लिक्विडिटी स्वीप्स. सो इवन इफ यू सी ओवर हियर, लंदन हाई स्वीप किया, प्राइस नीचे आया, फिर टैप इनटू रेजिस्टेंस एंड देन वेंट हायर. उसके बाद अगेन दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल. एक दोस्त ने मैसेज किया कि 300 यूरो ची करोड़ गेम तो हार गया, तो ये फेक है. असल च गेम फेक नहीं. अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो मैं श्योर हूं कि आपके साथ ये इतनी बार हुआ होगा कि आपने देखा प्राइस 2 बार इस लेवल पर पहुंच चुकी है, यानी प्राइस अपने सपोर्ट के पास है, और उसके बाद जब प्राइस वापस से अपने सपोर्ट के पास आती है तो आपको लगा होगा कि भाई वापस से प्राइस सपोर्ट के पास आ गई है, अब तो यहाँ से प्राइस ऊपर बढ़ जाएगी. तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पर बाय कर लिया, जो कि आपने सीखा है कि भाई सपोर्ट के पास हमें बाय करना होता है. अब जब आप यहाँ पे बाय करते हैं तो आपने यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगा रखा होता है, जो कि एक सेल करने वाला स्टॉप लॉस होता है. अब होता क्या है कि जैसे ही आप बाय कर लेते हैं उसके बाद प्राइस नीचे आती है, आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होता है.
I hate you. You might be a little lightheaded from the lack of oxygen. Alex is barely sleeping. I know. See that 500 grand floating right there? You want to risk it for 600 grand. Full transparency, the next trap is probably the easiest trap of all. I'm serious. If you were to ever stop, I don't think now is when you would stop. What? That would have been a lie. I was in fact not lying. Anyone with a developed prefrontal cortex should be able to pass this next one. Welcome to the next trap. This, in theory, should be the easiest 100 grand of your life, okay? I need you to pick either a Reese's Food Bar or a Hershey's Food. One needs to go in the trash. There we go! I would have agreed that! Well, of course I was thinking this 100 grand. That's right. Now you have $600,000 in cash. Jimmy, that's 680. Yeah, but you should know about that. Thanks. Do you want to risk this $600,000 mini ocean of money for the chance to win $700,000? You're crazy. I can tell he's about to say yes. Dude, my mom would be so mad at me if I listen right now. Yes or no? Just one more. Let's put it. Alright, let's do it. Yes. Let's do it. One more. I actually though, like these. Yeah? You know, let me do one. Okay. Well, where we're going on this next trap, Mac's gonna need a blood. Can you see? I cannot see. Oh. That was a lie. Alright, maybe actually two blood. Well, I hope he's not scared of heights. And if you're wondering why I said up heights earlier, well, stand us up! Oh, we're going up! Mac may know that we're going up, but not how far. Oh my god, dude. We're going 200 feet in the air, where he's gonna have to face his biggest fear. And he wants to walk away with 700 grand. Mac, let's take off the trash can. Hands up! Mac, welcome to the next trap. I hope you're not afraid of heights. I'm scared, bro. Dude, that looks terrifying. The next trap is simple. All you have to do is walk to the other side on this absurdly thin balance beam. Okay, this is insane. Oh my gosh. I just don't know how he's gonna do this. I'm so scared right now. I'm like so scared. Bro, this is terrifying. Oh, would you do this? Like, oh, heck no. I would never do this. 700 grand on the line. His worst fear. Let's see what happens. Okay, I can't think about it anymore. But it is. Dude, well, he's definitely at the point of no return. Oh my gosh. Holy crap, he's great! Oh! No way. Oh! Yeah! That's what I'm talking about! That is what I'm talking about, baby! Oh my god! Based on the first couple of steps, I did not think he was going to make it. As requested, I will not try to influence you. Do you want to walk away with your 700 grand or risk it and keep going for the $1 million? Your decision. I have no idea right now. Believe it. Just an insane amount of money. I'm just so close. Just feel like I want to almost see the next 3 challenges, right? Final answer. I'm going to the next one. If he fails the next trap, I'm going to feel terrible. Mac now only has 3 traps remaining to win $1 million, but it only gets harder from here. You decide to risk the money. Let's do this. I'm so scared. Lights on. This next trap may look a little familiar. Our most viewed video is Wicked, so I thought it would be fun if we combined the glass bridge game with a cookie cutting game, all into one trap. Just like in Squid Game, you have a honeycomb here. You have to cut out the shape that's there and put that exact shape on the scanner. If you break the cookie, it won't fit the circle, then the bridge will drop. But if it's the exact same size, the door will open and you have to do it 3 more times. How much time do I have? There is no time limit. Thank God. No, but you've been taking God. Some of these challenges, it takes an hour, so I might give you one. No, don't give me one. Okay, well, can you just at least start? Okay. The strategy, Jimmy, is I will make this quick, and that's going to melt the sugar. And ideally, I can poke this needle through this cookie. Your strategy is Squid Game. That's a win.
back. Get away from the back. Didn't touch you. You need to stay over there. What about my girl? You're good. Lights on. He's gonna solve the trick pretty easy. After the trick is a sword. Bro, I put you way harder. Oh! Okay. Okay. Also, wait. Oh no! I'll replace that. Because the money was so far away, I moved it over here in case you forgot. We were part of it. I will replace it. You can proceed. For the record, I represent business. Really? Yeah. At this point, seeing how sad you are at the losing, I would actually highly recommend if you win, you walk away after this. That's what I thought after. That's what you thought after every trip. But yeah, we're here. Wow, this is sliding off. Last three. Oh my god. I think you did it. Okay. Lock on in here. Cookie up. Now comes the real show. Umbrella. The hardest shape. If I put this, I don't think I should proceed again. Alright, how about this? Cut this stupid umbrella out and then just take the bucket. For my sin. For my sin. Okay. Oh, and by the way, this one has a 10-minute time. Okay, it's ticking right now? Yeah. Already still like, oh, 9 minutes and 50 seconds per minute. how about Yeah. I will not be speaking. I completely understand. $800,000 is on the line. $8 per second. Yeah. Okay. He's using the money as a hammer. If they didn't do that in Squid Game, I've never felt more intensity in my life. This is very, very difficult. Shoot hammer. Start to break it off. Start to pull pieces off. Just, there's 60 seconds left. Oh, no. I actually Such a man. And I had it $700,000. I don't know what it does. have Earth left if you just lost the Earth challenge. Super level. Okay. Stand up. Let me know. You're in a Mr. Beast video. Quit playing right now. I'll be honest, guys. This was pretty sad. I decided to get back to